हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एक्टिविटीज़। इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एक्टिविटीज़ फर्स्ट ईयर एनईपी का जो सिलेबस है उसमें वर्टिकल 6 में एक सब्जेक्ट है सीसी करके, जिसे कहते हैं सीसी, उसी को बोलते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़। तो उसके यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है कल्चर एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस, तो उसी की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि कल्चर क्या है, फिर समझेंगे उसके मैनिफेस्टेशंस के बारे में। देन कल्चर क्या है, तो द टर्म कल्चर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड। कल्चर, ये लेटिन वर्ड कल्चरा से आया है। इसका मतलब होता है टू कल्टीवेट और टू केयर फॉर। सो कल्चर इज रिफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, एक वैल्यूज जो शेयर्ड है अमंग द पीपल्स, बिलीफ्स, norms and practices that characterize a group of people or society। कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल्स या सोसाइटी के कुछ लोग जिनके अमंग कुछ वैल्यूज शेयर्ड हैं, कुछ बिलीफ शेयर्ड हैं, कुछ नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस शेयर्स हैं। तो ये जो शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं, ये क्या करते हैं, कल्चर फॉर्म करते हैं। तो इट कंपासेस द एवरीथिंग, डिफाइंस अ कम्युनिटी वे ऑफ लाइफ। कम्युनिटी किस तरह से अपना लाइफ गुजारेगी, किस तरह से लाइफ जिएगी। फ्रॉम लैंग्वेज, कस्टम, रिचुअल्स टू सिंबल, आर्ट एंड लॉज, ऑल दिस। सो दिस terms or these fundamentals collectively defines the culture of a group or a society or the group of the peoples. So, according to the Edward Taylor, culture as that complex whole which includes the knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habits acquired, very important word, the acquired by a man as a member of the society. तो बिलीफ्स, मोरल और आर्ट, लॉ, कस्टम जो एक ह्यूमन बीइंग एक्वायर्ड करता है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उसी को कहा गया है कल्चर कहा गया। तो वी कैन से कल्चर इज अ कलेक्टिव ऑफ द नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉज, कस्टम्स एंड ऑल दिस, but these are the acquired with respect to the time. According to the UNESCO, culture as a set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional feature of society or a social group that it encompasses in addition to arts and literature, lifestyles, way of living together, value system, tradition and other beliefs। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक सेट ऑफ द डिस्टिंक्टिव स्पिरिचुअल, मतलब कुछ अलग अलग, हर एक सेक्ट, हर एक ग्रुप के लोगों का क्या होता है, अलग अलग स्पिरिचुअल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल फीचर्स हैं। इसी के साथ साथ क्या, आर्ट, लिटरेचर, लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग टुगेदर, वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशन, कस्टम्स, बिलीफ, इन सभी को कलेक्टिवली फॉर्म करके भी क्या बनता है, कल्चर बनता है। तो अल्टीमेटली बात वही कही जा रही है कि एक कल्चर जो होता है वो कंपोजिशन होता है आपके इंटेलेक्चुअल का, इमोशनल का, आपके बिलीफ्स का, आपके वैल्यूज़, मोरल, आर्ट, लिटरेचर, इन सभी का क्या होता है, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सभी का क्या होता है, जस्ट कंपोजिशन होता है। या कलेक्टिवली इन सभी ये सभी क्या फॉर्म करते हैं, आपका कल्चर फॉर्म करते हैं। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर। कल्चर के अगर कंपोनेंट्स को देखें तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स, जो कल्चर के कंपोनेंट्स है वो दो सेक्ट में डिवाइडेड है, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल को कहा जाता है टेंजिबल, टेंजिबल ऑल्सो, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स and artifacts created and used by the people like buildings, tools, clothing, artwork। ये क्या होता है, हर कम्युनिटी टू कम्युनिटी क्या होता है, चेंज होता रहता है। हर एक ग्रुप ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंगली आर्ट वर्क, क्लोथिंग, जैसे अगर बात करें तो नवाड़ी साड़ी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के कल्चर्स में है। देन आप एक टाइप का जो गमछा होता है वो बिहू कल्चर्स में है, जो नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के कल्चर में है, जो एक टाइप का गमछा होता है। देन इस तरह से हर एक जगह क्या है, कुछ एक आर्ट वर्क है, कुछ क्लोथिंग स्टाइल्स है, बिल्डिंग टूल्स हैं। जैसे आप साउथ के मंदिर्स देखेंगे तो उनके जो टोम है वो किस तरह से एकदम वर्टिकल वर्टिकल है और कोनिकल टाइप है।
तो इस तरह से आपको क्या होता है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, टेंजिबल चीज़ें हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो अगर किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं, कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका मटेरियल कल्चर हो जाता है। देन इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स लाइक द बिलीफ्स, कुछ हमारे धारणाएं हैं, माइथोलॉजीज हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कस्टम्स दैट शेप द सोसाइटीज वे ऑफ लाइफ, इसे क्या कहा जाता है, इनटेंजिबल कहा जाता है। तो इस तरह से दो कंपोनेंट्स है, एक मटेरियल कल्चर, एक नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर दैट वॉट एवर थिंग्स वी आर विजिबल टू अस, ओके, that is building tools, clothing, and artwork. All these intangible or the non-material cultures are like belief, beliefs, values, norms, customs, and all these. Then characteristics of the culture. Culture की characteristics है, तो first of all the culture is learned. Learned means it is acquired. Learned means it is acquired. It was not innate. Okay, that is innate means the since beginning. Okay, or the natural. It was not natural. It was acquired by the human being through the socialization and the education. Then shared. This culture, the whatever the values and beliefs, okay, we have, that is shared among the group or the society. So it is a collective phenomena. It is shared among the number of the groups or the societies. Then dynamic. Culture is not static. Culture is not static. It is evolved with respect to the time. So it evolves over the time due to the internal and external influences. The culture we are seeing sees right now. Okay, it was not same as since beginning. Okay, it is evolved with respect to that time, and it is evolving. It will more evolve with respect to the time. Then symbolic. The culture relies on the symbols such as the language, gestures, object to convey the meaning. Okay. Then integrated, different element of the cultures are interconnected, creating a holistic system like value, belief, moral, art, literature. These all are connected together to form a culture. Then adaptive. Culture helps the societies to adapt their environment. Like if you look adaptive for the for example, if you look to the people of the Jammu and Kashmir, whatever their attire is there, okay, whatever the clothing is there, their clothing is as per their geographic requirement, that is climate requirement. So that culture helps the society to adapt the environment. So next is manifestation of the culture. Manifestation means express, how to express, अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं हम, कि कल्चर को किस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो कल्चर इज मैनिफेस्टेड इन वेरियस फॉर्म्स। वेरियस फॉर्म्स जैसे हमने बात की, विजिबल जिसको क्या बोल सकते हैं, टेंजिबल, और इनविजिबल जिसको नॉन मटेरियल बोल सकते हैं, या इनटेंजिबल। तो बिलो आर द की मैनिफेस्टेशन। पहला की मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर क्या है, symbol. There are the few symbols through which can represent the our idea, beliefs, our idea ne, beliefs, values, and the languages, values and beliefs, customs and traditions, rituals, art and literature, food and cuisine. These are the manifestation of the culture. These means these are the parameters somehow or some extent represent the culture of a society or the group of the people. So symbols are the object, gestures, sounds, or images that represent the something else. Okay, that represents a group of the people. If you look upon the flag, okay, if you look upon the flag, so here are I have pasted a few flags. Okay, that is, this is the flag of the Hinduism, this is the flag of the Islam, this is Christianity, Jainism, Sikhism, Buddhism, Judaism. These are the flags. These flags represents, okay, these flags, something we can call it as a symbol only. Okay, these are the different symbols on these flags represent the some community or the group of the people followed some faith or belief. So the very first manifestation is a symbol. The second is language. Language is a primary medium of transmitting the culture. It enables the communication and sharing of the ideas, beliefs, and the values.
It includes spoken languages, written script like Mahakavyas, okay, Mahabharata, then Ramayana, then Gita, written script, and non-verbal communication such as body languages. So here is if we look upon the some medium of the communication for greeting, okay, in India we can observe the namaste, in Pakistan marhaba, then in Spanish hola, and then all these are the different languages, okay, that can represent the somehow the group of the people. If we get to know something word like hola, so we can definitely this person is might be belongs to a span, or because he is speaking Spanish, okay, someone is speaking is Bhojpuri language, though we might say that he is from North India, or the some part of the North India like UP, Bihar, and all this side. So this language somehow make us decide or take a decision that person belongs to which sect or the category or the which part of the country, and which part of the world, and all this. So some this way the language also make us to identify the group of the peoples. Then values and beliefs. Values are the principles that guides behavior, decision making in society, such as a respect, freedom, and equality. So these are the values. Every culture, every faith, every belief follows by some values, okay. Respect, like if in Hinduism we used to say what we used to say, we used to say namaste when we meet someone, okay. In Islamic faith they used to do salam. In Christianity they used to shake hands, okay, and then hugs the people. Then these are the different values, they how they show the respect to each other. Then equalities, these are the values every religion or the culture has. Then beliefs and the conviction. Beliefs are the convictions or acceptance the certain things are true or the real, often rooted in religion, philosophy, or ideology. We can say here the different mythological stories that we have heard from our grandparents, that are being believed from generations, okay. So that is the belief that we carry, okay. So every culture, every religion, because culture is totally what we can say totally related with the religion, okay. So from the religion we have different mythological stories that has been passed from generation to generation, and that is nothing but the belief that we have. Then next to the custom and tradition. The customs are established practices followed by the members of culture, often passed down from generation to generations. And tradition refers to the specific practice or belief that are preserved over time, such as the religious rituals, festivals, or celebrations. Then next is ritual. Rituals are formalized and often ceremonial practices. Okay, like what we do, Havan, Puja, then what namaz, that are performed regularly, such as a wedding, funeral, or religious services. Then art and literature. Art may be visual or performing or literary, is a significant culture expression that reflects the society's belief, values, and experiences. And literature includes poetry, fiction, and historical texts, often serve as a repository for the cultural narratives, myths, and histories. So, art and culture represents, sorry, art and literature represents the culture in a very significant way. And next is food and cuisine. So, food practices and cuisine reflect the cultural identity, are often associated with the specific rituals, celebrations, and social practice. Dietary customs are deeply tied to the religious beliefs, okay, like vegetarian, non-vegetarian, geographic factors, okay, where actually do we live, okay, most of the people living the coastal ends, okay, might be they have seafoods in their foods,
and historical developments. Okay, so food and cuisines are closely associated with these all factors, that is their religious beliefs, geographic factors, and historical development. So these are the few parameters that manifest the culture of a society or the group of the people. So that's all with the culture and its manifestation. I hope you like the video. If you love the video, please like it, share with your friends, and if subscribe the channel if yet not. Thank you so much for the watching.